दिल्ली में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और सर्दी में घूमने का रोड ट्रिप का अपना अलग ही मज़ा है। और जब रोड ट्रिप की बात हो रही है देन व्हाट्स बेटर देन हैविंग अ डीजल कार विथ यू। जिस डीजल कार की आज मैं बात कर रहा हूँ वो है किया सेल्टोस 1.5 डीजल। अब किया सेल्टोस कॉम्पैक्ट एसयूवी में कुछ चुनिंदा डीजल कार ऑप्शंस में से अवेलेबल है बिकॉज अदर कार्स दे ऑफर टर्बो पेट्रोल एंड पेट्रोल इंजन ऑप्शंस। सो डीजल जब ये मार्केट इतना श्रिंक हो रहा है एक्चुअली किन लोगों के लिए बनी है, इस वीडियो में एग्जैक्टली हम इस बारे में ही बात करने वाले हैं। सेल्टोस टर्बो पेट्रोल के साथ भी अवेलेबल है, उसकी रिव्यू हमने डिटेल में कर रखी है लॉन्च के टाइम पे एंड दैट इज लाइव ऑन द पार्क प्लस ऐप ऑन अ यूट्यूब चैनल। गो एंड चेक इट आउट देयर। आई एम नॉट गोइंग टू डाइव इनटू डिटेल्स ऑफ फीचर्स, डिजाइन, लुक्स, वो आप वहां देख सकते हैं, बट कोर इसमें बात होने वाली है इसके परफॉर्मेंस में, बोथ इन द सिटी एंड ऑन द हाईवे। कि सिटी में इसकी फ्यूल इकॉनमी कैसी है, हाईवे पे फ्यूल इकॉनमी कैसी है और साथ में परफॉर्मेंस कंफर्ट आपको सेल्टोस डीजल कैसी ऑफर करती है एंड एग्जैक्टली जिनके लिए गाड़ी बनी है। फॉर्मेट में थोड़ा सा समझा दूँ, हम इसको 0 से फुल टैंक तक ब्रिम करने वाले हैं, उसके बाद हम इसको फ्यूल रन टेस्ट करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू टेक आउट द फ्यूल इकॉनमी, द एवरेज ऑफ द कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई एम शुभम पराशर, यू आर वाचिंग पार्क प्लस योर कार ऐप। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड एंड डू हेड टू द ऐप फॉर ऑल द अपडेट्स इन द इंडियन कार बाजार। एंड नाउ लेट्स गेट गोइंग। Kia Seltos की डिटेल रिव्यू कवरिंग ऑल द कॉमन एस्पेक्ट्स, डिजाइन, इंटीरियर, फीचर, सेफ्टी और पेट्रोल इंजन की परफॉर्मेंस इज ऑलरेडी लाइव ऑन द पार्क प्लस ऐप एंड यूट्यूब चैनल, सो डू चेक इट आउट फॉर अ प्रॉपर लो डाउन। आज हम बात करने वाले हैं Kia Seltos डीजल की परफॉर्मेंस, कंफर्ट और फ्यूल इकॉनमी के बारे में। हाईवे परफॉर्मेंस से पहले एक नजर डालते हैं सेल्टोस की सिटी फ्यूल इकॉनमी, परफॉर्मेंस एंड ईज ऑफ यूज पे। सिटी फ्यूल इकॉनमी निकालने के लिए हमने टैंक में मिनिमम फ्यूल छोड़ा था, शोइंग अ रेंज ऑफ जस्ट 47 किलोमीटर्स बिफोर गेटिंग इट फुल। एंड एज यू कैन सी द टैंक इज कंप्लीटली फुल नाउ। हमने इसे ब्रिम तक नहीं किया, ऑटो कट पे छोड़ दिया। रेंज 875 किलोमीटर की शो कर रही है। लेट्स स्टार्ट अ फ्यूल रन और देखते हैं कि रेंज एक्चुअली अब कितना मिलता है। So we have driven for almost 500 kilometers in the city और अब हमारी टैंक जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ रही है। कार रिजर्व में आ चुकी है। वी आर रनिंग ऑन रिजर्व फ्यूल बट आई थिंक 20 किलोमीटर्स वॉज द रेंज जब हमने लास्ट टाइम इसको रिफिल किया था और उसी डिस्टेंस टू एम्प्टी रेंज पर ड्रॉप करके देन वील रिफिल इट अगेन विद द सेम एग्जैक्ट फिगर ऑफ फ्यूल इसकी हाईवे की फ्यूल इकॉनमी टेस्ट करने के लिए। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि सिटी में इसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है एंड ओवरऑल फ्यूल इकॉनमी क्या मिल रही है। नाउ सिटी ड्राइविंग कंडीशन में मैंने मोस्टली इसको नॉर्मल में चलाया है, इको में भी बीच में कभी कभी चला रखा था एंड स्पोर्ट जस्ट टू टेस्ट हाउ इट परफॉर्म्स मैंने बेयरली 2 बार स्पोर्ट्स मोड में इसको एक्टिवेट किया था। बट ऑन द फ्यूल इकॉनमी साइड more or less because I was not being too aggressive with that throttle या फिर मैं बहुत धीरे बहुत ज़्यादा आराम से ज़्यादा अच्छी फ्यूल इकॉनमी निकालने की कोशिश भी नहीं कर रहा था एंड ऑन एन एवरेज मुझे आराम से 16 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की फ्यूल इकॉनमी सिटी में सेल्टोस डीजल में मिली है। नाउ व्हेन आई वाज डूइंग इन इको इट वेंट टू अराउंड 17.2 किलोमीटर्स पर लीटर, इन स्पोर्ट भी 15.6 15.7 किलोमीटर्स पर लीटर के आसपास मुझे मिल रही थी। That's also because my driving behavior was same in all the modes. So again, मैं बहुत ज़्यादा harsh accelerate नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा आराम से भी नहीं करता। I was just driving normally in all the modes. As far as our test assumption go, I think 16 kilometers per liter or around that figure you can get easily in the Kia Seltos diesel in city. And on a full tank हमने just over 500 kilometers clock कर लिया हुआ है. So I think that is a good फ्यूल इकॉनमी टू गेट इफ आपकी जो रनिंग है वो सिटी में एटलीस्ट 50 किलोमीटर्स 50-55 किलोमीटर्स एवरी डे होती है। आई थिंक देन द किया सेल्टोस डीजल मेक्स सेंस फॉर यू। नाउ परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, यू कैन सी दैट वी आर इन टाइट सिटी ट्रैफिक कंडीशन एंड कार्स आर ऑल अराउंड अस, द ट्रैफिक इज क्वाइट डेंस बट
to navigate and to cut through city traffic, I think it's very easy in the Kia Seltos because again dimensions, it's just the right dimension. The car feels spacious and is not overly huge कि आपको city traffic में disturbance होगी. So I think because of all that, it's very easy to drive in city. Also we have enough aids to help me, like मेरे पास 360 camera view with blind spot monitor भी यहाँ सामने dials पे आता है. Very neat, very crisp. And again whenever you are turning you have a clear view here, so navigate करने में traffic में बहुत easy होता है. And I can use this as hack as well. जब मैं कार पार्क कर रहा होता हूँ तो साइड की व्यूज़ देखने के लिए, या फिर ट्रैफिक कंडीशन में मेरी बगल वाली गाड़ी मेरे से कितनी नज़दीक है वो देखने के लिए, या अगर कोई बच्चे गाड़ी के आसपास हैं जो अंदर ब्लाइंड स्पॉट के कारण आप नहीं देख सकते हो, वो भी आप यहाँ से आराम से देख सकते हो. सो वेरी गुड सेफ्टी फीचर टू हैव इन दोज टर्म्स. In terms of performance, normal में the car will never feel underpowered. You have good response from the engine. Even the gearbox is good to respond. In Eco, it gets a bit sluggish. You will need to push the throttle a little to build up on the rev. But for most of the part, it does the job. You know, at no point the car will feel underpowered, and at the same time, power delivery बहुत ज़्यादा overwhelming भी नहीं है. So that you know, it's not that it's very punchy. And it doesn't feel underpowered as well. काफ़ी balanced आपको power delivery मिलती है. The only downside is NVH levels in the diesel is pretty high. You know, compared to petrol, you'll get to hear that engine quite a lot. It gets vocal even at lower revs. And when the car is idling on a traffic signal, तभी वो जो डीजल क्लैटर आप थोड़ा अंदर सुनते हो. एंड इवन ऑन द सीट्स, ऑन द स्टीयरिंग व्हील, ऑन पेडल्स, वो वाइब्रेशन हल्की फिल्टर इन होती है. नाउ compared to petrol Seltos, be it the turbo petrol, be it the 1.5 liter MPI petrol, you know, the NVH levels are a bit higher and not too much bothersome, but yes, you'll feel them. But compared to it, other rivals like compact SUV segment में तो as such कोई rival नहीं है, but mid-size SUVs आपके पास Hector में जो 2 liter diesel engine मिलता है, या फिर Safari में same diesel engine मिलता है, you know, it's slightly better than the MG Hector in terms of NVH levels, and it's at par with the new Tata Safari in terms of NVH levels. So yes, as far as refinement goes, as far as diesel standards are concerned, it's pretty much right there with its rivals. पेट्रोल से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर इश्यू हो सकती है if you're too used to driving petrol cars. And now when it comes to ride quality, it is slightly better than the petrol because the thuds are not too much prominent. आपको बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं देते, बहुत ज़्यादा पिंच भी नहीं करते हैं. पेट्रोल में थोड़ा बहुत आप अभी भी सुनते हो. So I think that's more or less because of the weight as well and because of the way the suspension has been tuned. But the Seltos diesel just feels slightly more comfortable and plush than the petrol when it comes to ride quality and absorbing the shock. सिटी में स्टीयरिंग व्हील की जो वेट है एंड हैंडलिंग ड्राइविंग डायनामिक्स इज अगेन एट पार विद द पेट्रोल Kia Seltos. So that was our city run with the Kia Seltos diesel. आपको हमने फ्यूल इकोनॉमी के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में और ईज ऑफ यूज़ के बारे में बता दिया है. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू टेस्ट इट ऑन द हाईवे. जो रूट हमने सेलेक्ट किया है दैट इज दिल्ली टू आगरा एंड बैक ऑन द यमुना एक्सप्रेसवे. आगरा के अंदर हम नहीं जाने वाले. वी आर गोइंग टू कवर द स्ट्रेच ऑफ द एक्सप्रेसवे एंड विल टेल यू हाउ इट परफॉर्म्स ऑन द हाईवे और फ्यूल इकोनॉमी क्या मिल रही है. सो लेट्स गो. सो फाइनली Kia Seltos डीजल में हमारी हाईवे रन जो है वो आगरा तक की कंप्लीट हो गई हुई है. वी आर जस्ट अबाउट टू एग्जिट द एक्सप्रेसवे ऑन द आगरा साइड और यू टर्न लेके वापस जाएंगे. नाउ द 1.5 liter diesel engine, it's a 4-cylinder unit and it belts out around 114 brake horsepower at 4000 rpm and 250 newton meters of peak torque from 1700 to 2750 rpm. जो हमारे पास ट्रांसमिशन है वो 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है. इट्स अ टॉर्क कन्वर्टर यूनिट एंड दिस इज अवेलेबल विद द 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एज वेल. अब मैं पहले स्टार्ट करता हूँ इसके परफॉर्मेंस से. सी हाईवे पे जो सिटी में हमने आपको बताया था परफॉर्मेंस मोर और लेस वैसे ही देखने के लिए मिलती है. इट्स अ वेरी कंफर्टेबल हाईवे क्रूजर बिकॉज इंजन द पावर डिलीवरी इज़ वेरी स्मूथ, वेरी लिनियर. यू नो डीजल इंजन में जो टॉर्क हिट के टाइम पर जर्क होता है वो यहाँ पर काफ़ी आयर्नड आउट है, काफ़ी इवन है. तो काफ़ी स्मूथ इसकी पावर डिलीवरी यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलती है. बट एट द सेम टाइम
when you put this in eco mode, जैसे अब हम अगर eco में इसको switch कर लेंगे, then power delivery थोड़ी sluggish हो जाती है. It reflects tremendously well on the fuel economy. Eco में जब तक हम चला रहे थे इसे on the highway, according to the meter, I had a fuel economy of 21.7 kilometers per liter, और 21 kilometers per liter इसकी claimed fuel economy है. Now जैसा हमने सिटी में किया था, आई वॉज ड्राइविंग ईजिली, आई वॉज नॉट गोइंग वेरी हार्श ऑन द थ्रॉटल, या फिर मैं बहुत ज़्यादा भी आराम से नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट हाइपर माइल्डिंग, क्योंकि एक डिसेंट आपको कम्यूट के पे जो हमारे पास फ्यूल कहाँ से निकलती है वो देने का हमारा यहाँ पर आइडिया है. ना इको में परफॉर्मेंस अगेन थोड़ी स्लगिश हो जाती है. स्टिल यू कैन डू ट्रिपल डिजिट स्पीड्स 100-110 किलोमीटर पर आवर, बट यू विल बी क्रूजिंग. अगर फ्रीक्वेंट ओवरटेक्स कर रहे होते हैं तो इको में थोड़ी सी इशू आती है. स्विच बैक टू नॉर्मल एंड यू नो इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड मोड. परफॉर्मेंस भी काफ़ी एडिक्वेट है, सफिशिएंट है, एंड फ्यूल इकॉनमी भी अच्छी मिल जाती है. आई वॉज मैनेजिंग अराउंड 18 किलोमीटर पर लीटर, 19 किलोमीटर पर लीटर ऑन द नॉर्मल मोड, और यू नो परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रही थी. इट वॉज नॉट लाइक द कार वॉज फीलिंग अंडर पावर्ड. पूरे टाइम पे पावर डिलीवरी जो है वो एडिक्वेट थी. बट ऑन द हाईवे द मोमेंट यू स्विच टू स्पोर्ट्स मोड, that's really when the engine and the gearbox come to its own, because the power delivery again gets a bit aggressive. जो throttle response है वहाँ पे वो sharp और brisk हो जाते हैं. ना उसका फ़ायदा कैसे होता है? Just the moment you press the throttle, the gearbox is quick to respond, and downshift जो है वो जल्दी आती है. It's quick to downshift, and making those overtaking on the highway, वो overtakes काफ़ी easy हो जाता है. They come very naturally and very easily to you, and even better is that when you are pushing it harder, you know, it's exactly when the gearbox is responding just the way you want. Obviously DCT के इतना जो हमें turbo के साथ मिलता है उतना quick नहीं है, but still it's sufficient enough, you know, to give you that punch from the engine you need. So yes, sports mode में performance काफ़ी अच्छी आती है, and fuel economy भी you can easily get around 14.4-15 kilometers per liter. So ज़्यादा fuel economy इतनी भी नहीं drop down होती even in the sports mode. So as long as highway commute in the Kia Seltos is concerned, I think अगर आप frequent highway commute कर रहे हो, you know, like at least twice or thrice in a month, or if you are doing long distance commutes in the city and on the highway, I think the diesel option is for you, because you will be getting good in terms of performance as well. The performance is satisfying. At the same time, you will be getting a good fuel economy as well. So I think the Kia Seltos is a good package for people who do frequent highway commutes and long run. Well, even in terms of handling, Seltos diesel feels reassuring. The steering weighs up nicely, keeping you confident while cornering or changing lanes. At the same time, it is not as engaging as its German counterparts. As far as the steering feedback and behavior is concerned on the highway, it feels adequate. It weighs up nicely when you speed up, so आपके पास वो एक reassurance मिलता है when you are speeding up. It's not like it will feel too light. So yes, you have that reassurance. At the same time, it is not very engaging or very sporty because the heft feels a bit artificial. But yes, it does the job and gives you that reassurance when you are cornering hard or when you are changing lanes. So I think for me that's sufficient for a decent highway cruiser. It comes with level 2 ADAS features as well on the highway. अच्छा response करती है. So yes, it is a good safety feature to have, because just in case if you doze off, अगर आपको highway hallucination होता है, then the car will apply the brake if it senses a chance of collision, या फिर जब आप steering you know, or whenever your car is going out of the lane, it will steer you back. So a good safety feature to have. Again, finally, in terms of features as well, even the Kia Seltos diesel is quite well equipped. I have this 10.25-inch touchscreen infotainment system, a curved panel integrating the digital instrument cluster as well. यहाँ पर मुझे blind spot monitor का view मिलता है जब मैं lane change कर रहा हूँ, and when I give indicator. So again, good features to have, quite helpful when you are changing lanes and when you are doing long distance commute. The only thing is that this comes with wired Apple CarPlay and Android Auto, जो इस वायर के थ्रू कनेक्टेड यहाँ पर होते हैं. वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है. Not a deal breaker, but yes, वायरलेस कनेक्टिविटी वो एक अच्छा रहता है. यहाँ पर आपके पास कोई वायर टैंगल नहीं हो रहे होते हैं. ऑल्सो वॉट आई डोंट लाइक इज दैट जो एंड्रॉयड ऑटो का डिस्प्ले है वो बस 7 इंच के सेटअप पे है, नॉट ऑन द एंटायर स्क्रीन. सो यस, दैट कुड हैव बीन बेटर अगर वो पूरे स्क्रीन पे डिस्प्ले होता. बट अगेन, इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स, इन टर्म्स ऑफ UI, इट्स जस्ट सिमिलर टू द टॉप एंड वेरिएंट. सो अगेन, feels very nice in those terms. I have a Bose premium surround sound system as well, so yes, I am quite entertained on the go. Sounds very well with a center channel and a subwoofer. So yes,
In terms of sound quality, I think it's one of the best in the segment. And then other features like auto dimming rear view mirror. हाईवे पे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है क्योंकि जब पीछे से हाई बीम आ रही होती है, that time it dims them quite well, so a good feature to have. And you have other features like ambient lighting जो गाड़ी को अंदर से काफ़ी अच्छी सी वाइब देती है रात के टाइम पे. I have a wireless charger to keep my phone charged. Good storage space. यहाँ पर मेरे पास wireless charger के बाद भी एक decent storage space है. Storage space to keep my wallet and the car key. And यहाँ भी ये जो cup holders के ऊपर tray closer है, मैं यहाँ पर अपने फ़ोन पर आराम से रेस्ट कर सकता हूँ. And when I am not doing that, you know, it's big enough to accommodate my coffee mug as well. So big coffee mug and all मैं आराम से यहाँ पर रख सकता हूँ. On the highway, on a longer commute, you'll need this. And the door pockets are good to store big size bottles as well. So जहाँ तक features की और practicality की बात है, I think it's pretty much sufficient in every term you can imagine. इस वाले वेरिएंट में HUD head-up display नहीं मिलता है, and honestly I don't feel the need of it. 6 airbags you have in this car. ADAS features जैसा हमने बताया you have in this car. So in terms of safety, it has got you covered. And even the boot space is quite sufficient, adequate to carry luggage for 4 passengers. So yes, practical in that regard as well. Then you have dual zone climate control. Long distance commute में ये भी काफ़ी help करता है because again when you are traveling for more hours in the car, you can have different temperature settings for your passenger and for the driver according to their preference. And last but not the least, I have this panoramic sunroof as well. Lets the light in and enhances the sense of space inside the car. And you know, it really helps in this all dark cabin setup. So yes, in terms of features as well, it has got you covered. अब प्राइसेस की बात करें तो Kia Seltos डीजल की रेंज स्टार्ट होती है फ्रॉम 12 लाख रुपीस फॉर द बेस HDE वेरिएंट एंड इट गोज अप टू 19,60,000 रुपीस फॉर द टॉप ऑफ द लाइन X लाइन वेरिएंट. एंड दिस इज द ओनली डीजल कॉम्पैक्ट SUV यू कैन बाई. और फिर ये मिड साइज डीजल SUVs जैसे हैरियर और हेक्टर से भी ज्यादा अफोर्डेबल है. So that was my drive experience with the Kia Seltos diesel. लेकिन आखिरकार डीजल क्या आपको लेनी चाहिए? Well, if you do over 50 kilometers on regular basis in the city, or if you're someone who do frequent highway commutes, I think the Kia Seltos diesel is the perfect fit for you because you will be saving quite a healthy amount on the overall fuel cost compared to any other petrol or turbo petrol model. So yes, if you're someone who drive quite long distances, I think the Seltos diesel is for you. You're watching Park Plus, your car app. I'm Shubham Parashar and I'll see you in the next video. Ciao.